the efficiency of an ideal heat engine working between the freezing point and the boiling point of water is how much? Efficiency of an ideal heat engine. Waiting for your answers. So, efficiency formula 1 minus T2 by T1. And for percentage, you have to multiply this by 100. What is the answer then? 1 minus, then T2 means, let me remind you, this is temperature of the cold part, which is called sink, and T1 temperature of the hot part, which is called source, that provides the engine heat. So 1 minus T2 by T1, T2 is cold. Cold means 0 degree Celsius or hot means 100 degree Celsius, not Celsius, Kelvin. So cold is 273, hot is 373 in Kelvin into 100, 26.8. Because you don't have calculators there, that's why you have to understand, learn the technique of how you can shorten it, calculation. Chalo, next part. Are bapre. So column 1 says the processes and column 2 says the number of processes and column 2 says the processes themselves. So we have to match which number represents which process. Option A. Achha. First of all, this process number 4, this process which goes flat like this process we know that its pressure remains constant, that is isobaric process. So 4 number to number 4 to S should be, this number 4 graph has been given here as S, option S. So option S should be isobaric, and isobaric is option B in column 2. So we can match these two. So S must be B. सबसे easy तरीका, S should be grouped with B. ऐसा दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1 and ऑप्शन D. अभी भी, now let us see further. Any easier one? Process 1 देखो सीधा नीचे आ रहा है like this. So if a process is like this, PV, process 1 को देखो, this is process 1. You can see any other, but look at this process 1. This process 1 represents constant volume process, volume ना आगे ना पीछे. So process 1 is process P, constant volume, that is isochoric. So P should correspond to C in column 2. That means PC should be there. तो ऑप्शन डी ते PC ना, ऑप्शन 1 में PC, yes. So option A is correct answer. Yes, very good, very good. Option A, and 50% good. Who said option D? 50% good. अरे good है ना, बस be encouraged all the time. So you have to be acquainted with these things, how you should handle this. Question देख के ज़्यादा tough नहीं लग रहा, tough लग रही है options देख के कि कितना कुछ दिया हुआ. But it is a common scenario in case of IIT and in mains also. Common scenario ऐसे matrix matching option आता है. नीटेव देखो दिच्छे, तमने we should prepare for that also. Anyway, otherwise इससे सीखने को क्या मिला? हम लोग सिर्फ साम नहीं बना रहे हैं, कुछ सीखने का भी कोशिश करो. Did I tell you any day during the class which graphs are parallel in PV indicator diagram? Which graphs? Isothermal, adiabatic,
I, isothermal. Yes, I told you. Isothermal graphs. Yes, isothermals are always parallel. Why? Because a certain isothermal represents a certain temperature. And that is given here. This is for your help, this part. 700, 500, 300, they represent certain temperature. That means this curve has been maintained along 700 Kelvin temperature. That gives you what? Clue. हम लोग तो एक्चुअली चालाकी से इसका आंसर कर लिए, चालाकी से. द क्वेश्चन कुड हैव बीन डिफरेंट. कैसे? व्हाट अबाउट द प्रोसेस 3? देखो देखो प्रोसेस 3 एरो देखो, प्रोसेस 3 मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं. देखो प्रोसेस 3 हैज बीन ड्रॉन लाइक दिस. प्रोसेस 3 हैज बीन ड्रॉन like this, that is lying on the same curve or the middle curve out of these three curves at different temperatures. So process 3 is what kind of thermodynamic process? Who says this? Process 3. Very good. Next question here. Refrigerator. I'm reading it out. A refrigerator works between 4 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. So T1 being hot, 30 degrees Celsius. Or T2 cold, 4 degrees Celsius. These are given. It is required to remove 600 calories of heat every second in order to keep the temperature of the refrigerated space constant. So you need to take 600 calories of heat every second. This is dq, or you can say q. So as it is per second given, so we can write it dq by dt, that is rate of heat extraction. Refrigerator तो वही करता है, heat extract करता है. That is how much? 600 calorie per second. The power required is किसका? Refrigerator. The power of the refrigerator कितना चाहिए? तो भाई इतना हीट माने कितना, यही तो पावर का यूनिट है. कैसे? 600 कैलोरी. 1 कैलोरी माने 4.2 जूल. 1 कैलोरी माने 4.2 जूल. So if you multiply it by 4.2, you get calorie to joule. So this will become 1 0 गया, साइड में 0, 2520. ठीक ना? 2520 जूल पर सेकेंड माने वाट. तो आंसर तो यही होना चाहिए था, इतना वाट. लेकिन एक में भी नहीं है, इसका आसपास भी नहीं है. व्हाई? बिकॉज द रेफ्रिजरेटर इज नॉट 100% एफिशिएंट. अच्छा मैं लिख रहा हूं एक सिंबल बीटा, इसका ऊपर डिपेंड करेगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. इसका फॉर्मूला था T2 by T1 minus T2, and T should be converted to Kelvin. T2 by T1 minus T2. Let us do this. चलो करो करो करो. T2, the cold one, 4. So 277 by 26 is Right. And this difference is 26. Yes. This is a refrigerator. This is a refrigerator. Now, suppose from background, this is a plug and this is a socket. Now, when you connect it to this socket, this supplies an energy, that is W. A refrigerator does what? Refrigerator has food chamber inside, that is sink, cold environment inside, and it has the whole surrounding of the room source. Now source is at higher temperature T1. Sink is very cold T2.
Now, refrigerator is a heat pump. That means it does the reverse thing. That means it extracts heat from a cold body and rejects it to the hot surroundings when we provide it with some external energy W. W is supplied, heat extracted from a cold body, say this is a cold body. It extracts heat from a cold body, Q2, and it delivers it to a very hot body or a hot body, comparatively hot body, T1. So, extracts its Q2 and supplies it Q1 to the hot body. But to do this reverse process, there has to be some electrical connection, that is external aid of energy, that is W. Now, as I told you that this is a heat pump P. So, whatever enters, let us write plus. Whatever enters this circle, that is pump, let us write plus. Whatever leaves, let us write minus. जो बाहर निकल गया माइनस, और टोटल कितना है? 0. एनर्जी कंजर्वेशन. जो एनर्जी आया ये पंप का पास प्लस ले लिए, द एनर्जी दैट मूव्ड अवे फ्रॉम दिस नेगेटिव ले लिए. सो व्हाट वी गेट हियर, दैट द एनर्जी दैट इज W, that must be the output that we got divided by the input that we supplied into 100, that is percentage. So, output by input into 100. Now, output is what in this picture? Look at this picture. What has been the output? Output means, why do we buy a fridge, a refrigerator? That is the output we get. फ्रिज किस लिए खरीदते हैं? खाना ठंडा करने के लिए. खाना ठंडा कब होगा? When it extracts heat from that already cold food chamber. तो already cold food chamber से कितना heat extract किए? That is Q2. That is our output that we buy a fridge for. ये है output. और input उसके लिए क्या दिए थे? इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑन किए थे घर में लाके. That means electric connection से क्या एनर्जी दिए? W. So this is our beta, Q2 by W. Now from this, can you understand what should or how should we replace W? W replace करने जा रहे हैं Q1 minus Q2. So Q2 divided by Q1 minus Q2. And finally, we know that Q का ratio is same as temperature का ratio. So can we write T2 T1 minus T2, T2 T1 minus T2. A piece of ice falls from height h so that it melts completely. Piece of ice falls from a height h on a solid ground and it melts. H. One quarter of the heat produced is absorbed by the ice and all energy of ice gets converted into heat energy during its fall. Okay. 1/4 of heat produced is absorbed by the ice. 1/4 means 1/4 of the heat produced is absorbed by ice. So first let us find what amount of heat will be produced if it falls from a height h. So it was having a bolo 136 kilometer. 136 kilometer. 136 kilometers. মনে হচ্ছে ওটাই. So the technique is this: as it falls from a certain height, its potential energy mgh is converted to kinetic energy, half mv square, and this kinetic energy finally is converted to heat, and receiving this heat, the ice
so far which was solid now becomes water. This is the case, receiving this heat. Now, is the kinetic energy or which came from potential energy, actual origin, potential energy, was that energy 100% converted to heat? No. Only 1/4, this line, 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice. 1/4 of mgh. This is absorbed by ice. And then the ice melts. And we know that when ice melts, then it follows this formula Q equals to mL. L means latent heat. That is given latent heat. If you equate these two, M and M will cancel out. So you get, so H would be equal to 4L by G. আমি তখন থেকে ওটা ভাবছি আলাদা কেন, ঠিক আছে, চলো, গুড। Next part, 1 mole of an ideal diatomic gas undergoes a transition from A to B along a path AB as shown in figure. The change in internal energy of the gas during the transition is, अरे वाह, सम तो अच्छा है। चलो, क्या पूछा गया है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आइडिया से का चीज सुनो, लिखो इंटरनल एनर्जी चेंज DU. Do we know this? And then we will see who is correct. And those who didn't tell the answers, তাদেরও চেক করো না। দেখো টেকনিক শেখো এবার। টেকনিক, NCV dt, n mole gas with specific capacity at constant volume CV and change in temperature dt. That is the formula for change in internal energy of a gas. Here no temperature is given. Problem हो गया, formula तो ये है, main formula ये always, but nothing is given. Okay, टेक्निक देखो, n ठीक है, सुनो CV माने R divided by gamma minus 1. I had told you CV equals to R by gamma minus 1. Even you have proof of this. कॉपी में देखना किया हुआ है, into dt. तो dt माने कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. ओके, नाउ इफ आई राइट दिस थिंग, r बाय गामा माइनस 1 तो हो गया CV का वैल्यू n CV. अब dt T2 माइनस T1, आइडियल गैस इक्वेशन PV equals to nRT. So can we write T2, PV equals to nRT, so T equals to how much? PV by nR. Okay, minus T1 इसका PV by nR. n और R तो n और R ही रहेगा. So n और R न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? P2V2 minus P1V1 divided by gamma minus 1, gamma minus 1. देखो तो सब समझ में आया? लास्ट लाइन, NR and these NR cancel out. So what remains? Gamma minus 1. Now we did this thing. Gamma is 1 plus 2 by F, F being degrees of freedom. Minus 1. So chalo, 1 1 cancel. We get this thing. Shortcut to. Shortcut formula. But remember this thing. P2V2 first minus P1V1. P2V2 minus P1V1 divided by 2 by F. So we can refine this and write it in this way. Divided by 2 by Fk, we can write it like this, into F divided by 2. Box banao formula ko. If you want to do this type of numericals in a single line, this is the proof of that. I have showed you how this shortcut can be applied directly. Look at the arrow.
So P2 V2 means pressure and volume product of last point, that is B point. So how much is that? 6 into 2. This is P2 V2 minus P1 V1. That means the starting point values. P1 V1, 5 into 4. P1 V1 into F by 2, this much into degrees of freedom by 2. ये देखो diatomic gas दिया हुआ है, monoatomic degrees of freedom 3, diatomic degrees of freedom 5, 5 by 2. उसका बाद गया खत्म, सम खत्म, यही है. This is the answer. Now let us see how much is it coming. 12 minus 20 minus 8 into 5 by 2 minus 20 is the answer. Yes. Next question here. Monoatomic gas at pressure P, volume V expands isothermally to a volume 2V and then adiabatically to a volume 16V. अच्छा 2V पहले बन गया, फिर उसका बाद और वॉल्यूम एक्सपैंड किया कितना 16V तक. फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज, तो गैस का फाइनल प्रेशर कितना होगा. इसके लिए ना आई वुड सजेस्ट यू, मे बी इफ यू हैव प्रैक्टिस दोज मेनी सम्स तब तो बहुत अच्छा है. अदरवाइज ना आई वुड सजेस्ट यू कि ग्राफ ड्रॉ करो. जितना प्रैक्टिस कर लोगे ये इजी बन जाएगा, लेकिन तब मे बी यू डोंट रिक्वायर टू ड्रॉ दैट. बट माई सजेशन इज दैट ऑलवेज ग्राफ ड्रॉ करना. सुनो, फास्ट बोलছে वॉल्यूम V becomes 2V following an isothermal process and then adiabatically to 16V. बाप रे, उतना जगह ही नहीं है मेरे पास 16V का. ये रहा 16V adiabatic process. What should be the coordinates of this point? Hey, though 2V naught and isothermal process. How? Because PV equals to constant, isothermal process, temperature constant, that is P1 V1 equals to P2 V2. So if the volume has been doubled, pressure should be halved. ठीक है, चलो ये हो गया. During this adiabatic process, the formula that should be followed is PV to the power gamma equals to constant. Let us follow that. So P naught by 2, V to the power gamma, 2V naught to the power gamma. Gamma is how much given? 5 by 3. Let us write gamma first. Equals to the P. We don't know this P. That is the question. How much would that P be? Into V. V is given here 16V. I am writing V naught to the power gamma. So from this we find P3 equals to P naught by 2, then 2V naught, 16V naught whole to the power gamma, and gamma now let us put it 5 by 3. So what we get? P naught by 2 into, अरे तो 8 आया था, तो 8 का 1 by 3 पावर करने से 2 आता है, और 2 का टू दी पावर 5 करने से 32 आता है. 64. That was it. ये फटाफट बोल दो तो ये ऐसे शॉर्टकट है, मैंने सिंपल. एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है. प्रेशर ऑफ अ गैस, चलो एक साथ करते हैं. प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू, ओके, क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर बट एब्सोल्यूट. ये लिखा हुआ नहीं. हाँ बोलो बोलो. 3/2. यस, राइट आंसर. 3/2. यस. P proportional to T to the power 3 cube.
Now we know for adiabatic process p to the power 1 minus gamma t to the power gamma equals to constant. That means p to the power 1 minus gamma equals to constant by t to the power gamma. From this we can write that p to the power 1 माइनस गामा ना करके डायरेक्ट कर दे रहा हूं कि p t टू दी पावर गामा को ऊपर उठा दे रहा हूं. चलो प्रोपोर्शनल टू करने से कांस्टेंट भाग जाएगा, कांस्टेंट विल बी रिमूव्ड. वी हैव t टू दी पावर माइनस गामा ऊपर उठा दिया एंड p का पावर से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा. दिस शुड बी द रिलेशन. ये मैं समझाया था तब, इसी का एप्लीकेशन है बस. That is, this value now refers to this value. होना चाहिए ऐसा, हो रहा है ऐसा, given. So we can write 3 equals to minus gamma 1 minus gamma. That is 3 minus 3 gamma minus gamma. 2 gamma equals to 3, gamma 3 by 2. That is the case. ये thermodynamic system taken through cycle ABCD. बहुत आता है ऐसा स्क्वायर वाला सम. Heat rejected by the gas during the cycle is. ये बता दो, बहुत सिंपल है, एकदम ही सिंपल. ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन सी. अच्छा, ऑप्शन सी 2p. अच्छा, ऑप्शन सी 2p. हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल. ठीक है. सो आइडिया 1, दोज who cannot understand these things, idea 1, cyclic process for cyclic process what happens, we know change in internal energy, थोड़ा देर पहले डिस्कशन हुआ था, is 0. Okay. Second thing, work done, cyclic process, work done dW is equal to area inside the loop. पूरा जो क्लोज लूप है उसका इनसाइड का एरिया, दैट मीन्स ये एरिया, दिस एरिया, दैट वुड बी द वर्क डन. ठीक है. तो यहां पे क्या पूछा है, हीट रिजेक्टेड. ऐसा सम हम लोग किए थे प्रैक्टिस में. हीट रिजेक्टेड होगा ना इनटेक होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा. मैं बोला था तुम लोगों को, देखो ये तो पीवी ग्राफ है. इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दिस, ये तो फिर भी बहुत अच्छा ग्राफ दिया हुआ है, स्क्वायर टाइप. ये टाइप का ग्राफ होगा तो ये अगर नाम होगा ए पॉइंट एंड इफ दिस पॉइंट इज बी, देन वर्क डन ड्यूरिंग ए बी प्रोसेस, ए बी, ए टू बी 1, A1B process में work done is given by the area below A1B, this much. ये एक्सपेंशन है ना कंप्रेशन है वो देख लो. एज इट मूव्स फ्रॉम A to B, ऊपर वाला एरो देखो 1, A1B प्रोसेस, एज इट इज एक्सपेंशन, इधर जा रहा है ग्राफ. सो वर्क डन वुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वर्क डन होगा. हो गया एक रिवीजन. सेकेंड, नाउ लुक एट दिस. इफ वी कॉल A to B, A to B जाएंगे बट नहीं, B to A, रिवर्स प्रोसेस देखो, B to A, then the work done during this process would be given by this shade, a little less than whatever was for 1. So during the whole process, during the whole complete process, the work done will be given by the area under this only, what I call here loop. लूप हो गया. नाउ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से याद मत रखो, याद इससे रखो, ऊपर से जो गया अप
द ग्राफ दैट इज अप, वो क्या एक्सपेंशन न कि कंप्रेशन, अप, द ग्राफ अप दैट इज एक्सपेंशन, चलो उसका वर्क डन पॉजिटिव होगा, चलो वो जीतेगा, सो द नेट वर्क डन भी पॉजिटिव ही होगा बिकॉज वो अप है। और अगर ये ग्राफ ऐसा होता, एज इज इन दिस केस, तो इसमें आप जो ग्राफ है आप वही जीतेगा, लेकिन आप वाला ग्राफ तो अब कंप्रेशन दिखा रहा है, कंप्रेशन। ऊपर का ग्राफ क्या दिखा रहा है, बैक आ रहे हैं, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन होने से वी नो दैट वर्क डन इज नेगेटिव। I had told you expansion work done positive, compression work done negative. We know this. Now let us come to this question. ये क्वेश्चन में देखो, during this whole process we understand that the area would be nothing but the area of this rectangle. ठीक है, अब वर्क डन पॉजिटिव ना नेगेटिव, बिकॉज आप वाला जो ग्राफ है DC दैट इज पीछे आ रहा है, कंप्रेशन, तो नेगेटिव होगा। दैट्स वाई इफ इट इज नेगेटिव इट्स वर्क डन वुड बी नेगेटिव। ठीक, तो आप वाला ग्राफ कंप्रेशन दिखा रहा है, उसके लिए वर्क डन, इससे सिर्फ वर्क डन का आइडिया मिलेगा। वर्क डन वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव। और होगा कितना, तो होगा इतना, इसका एरिया कितना आया, P इंटू 2V, 2PV, तो वही आंसर है। नहीं, ऐसे करके मत सोचो, ये तो वर्क डन निकला। क्वेश्चन में क्या पूछा, हीट, तो हीट जो होगा, हीट dq इक्वल्स टू, आइडिया 1 क्या बता रहा है, देखो आइडिया 1 0 प्लस dw, दैट इज वर्क डन, हीट मस्ट बी नेगेटिव 2PV। एक भी ऑप्शन में दिख रहा है नेगेटिव 2PV, है ही नहीं। तो नहीं है तो क्या है, दे हैव रिप्रेजेंटेड इट बाय वर्ड्स। यहां पे क्या लिख दिया, रिजेक्टेड, हीट एडेड पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड नेगेटिव। मैच कर रहा है कि यस वी डिड करेक्ट। भले ये सम में उतना जरूरत नहीं पड़ रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली, लेकिन सोच के देखो, हीट रिजेक्टेड नेगेटिव होना चाहिए, आ गया हम लोगों का नेगेटिव, तो मैंने वी आर श्योर कि वी आर डूइंग करेक्ट। अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होना चाहिए। चलो ठीक है, सम बन गया। नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द आईआईटी पार्ट। आइडिया इज दिस, नंबर 1, ये ऑलरेडी सीख लिए हो तुम लोग, यू नो दिस। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग अ प्रोसेस। फॉर्मूला ऐसा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2, फाइनल P2V2 माइनस इनिशियल P1V1। हो गया। सेकंड, वर्क डन बाय अ गैस, वर्क डन ऑन द गैस, जो भी हो, गैस होने से ही चलेगा। गैस माने, यू अंडरस्टैंड दिस, वर्किंग फ्लूइड, ओके। and there is one internal energy, okay, work done gas, okay, there is another one, work done on this atmosphere, that is atmospheric pressure, that also holds this piston plate so that it disallows any movement in this direction. If you heat this gas, ये तो बढ़ना चाहेगा ना आगे, तो piston wants to move away like this, but this atmospheric pressure tries to hold it back, कि जाने नहीं देना है, तो इसको ठेल ठेल के you have to move this plate, so you have to do some work against this atmospheric pressure as well as you have to push this spring. तो आइडिया बनाओ पहले, फॉर्मूला तो मैं लिख दूंगा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट लिखोगे आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, बट आइडिया पहले बनाओ। क्या, दिस इज अ प्लेट, थोड़ा छोटा सा पिक्चर ड्रॉ कर लो प्लेट का,
इसका साथ ये स्प्रिंग ड्रॉ कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन बोलूंगा एंड यू विल बी सीइंग द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इन डिफरेंट बुक्स, और वहां पे वर्क डन बाय द स्प्रिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देगा तो एग्जाम हॉल में वो सब होगा नहीं, मैंने होने का चांस कम है, आई वुड नॉट से होगा नहीं, फिर भी बता रहा हूं सुनो। ये जो स्प्रिंग है एंड दिस एटमॉस्फेयर, बोथ ऑफ दिस आर होल्डिंग द गैस बैक कि भाई तू जाना नहीं आगे, हम लोग रोकेंगे तेरे को। तो ये कौन है? गैस। सो प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर है, और स्प्रिंग का भी फोर्स है कितना? kx। लेकिन ये तो प्रेशर है, हम लोग फोर्स कैसे लिखेंगे? ठीक है कोई बात नहीं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द पिस्टन। ये पिस्टन है, इसका एरिया ए, पिस्टन ये कैसे हो गया? ये पिस्टन ये है, एक्चुअली दिस इज द पिस्टन पार्ट एंड दिस इज द सिलेंडर, ये गैस है एंड दिस इज द पिस्टन, और इसका यहां पे देयर इज अ स्प्रिंग, और ये पिस्टन का दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज ए। उसी को साइड से देखेंगे तो ये दिखेगा, तो इसका एरिया में कितना लिख दिया? ए। सो दिस इज द प्रेशर against which the gas has to do some work. This is another pressure exerted by spring, force by area, pressure against which the gas has to do some work. Understand this picture, draw this. Chalo, if you have drawn this picture, last part, eta likha na. Likho, work done by the gas is equal to dw, लिखते पारो, dw is equal to, dw भी लिख सकते हो, वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग सिस्टम, वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग सिस्टम प्लस दिस वन इज इंपॉर्टेंट, वर्क डन अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और सिंपली एटमॉस्फेयर। दिस इज अ गोल्डन रूल। Now I am giving you formula. अब दे रहा हूं अस्त्र, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, ये आर्म्स दे दिया, अब एम्यूनेशन दे रहा हूं। वर्क डन बाय द गैस, सो इफ दिस वाज अ सिलेंडर, इसका तो फर्स्ट इट्स प्रेशर वाज P1, सिलेंडर piston was here. Now if you give it heat, what will happen? The gas molecules will increase their RMS velocity and will push this, so that suppose the cylinder moves to this position. During this, this has been the change in volume dV of the gas. But during this, another thing happened. What? As it moves in this way against a spring system, against a spring system, like this, and against another thing, that is atmospheric pressure, like this. This is the picture for that. Now formula, work done by the gas. तो जायज है, देखो इफ अगर हीट कर दोगे, इसका प्रेशर पहले तो P1 था, लेकिन प्रेशर बढ़ते 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 इसको ठेलते ठेलते जब आगे जाएगा हाई प्रेशर हो जाएगा अंदर, नहीं तो स्प्रिंग को ठेल के रखेगा कैसे? स्प्रिंग तो उसको पीछे फिर से वापस कर देगा धक्का देके। सो वंस यू स्टार्ट हीटिंग दिस गैस, the inside pressure of the gas goes on increasing and becomes very high as you go on heating it. So मेरा बोलने का मतलब ये है, pressure changes to any other value finally than P2, तब जाके वो आगे बढ़ेगा, स्प्रिंग को दबा के रखेगा P2. So स्टोरी बता दिया मैं। अब अस्त्र दे रहा हूं, आर्म्स। भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? PdV,
कौन सा पी लूं? पहले तो गैस का प्रेशर P1 था, बाद में तो P2 था। व्हिच P? एवरेज। अब इंजीनियरिंग में ये आता है, इससे टफ भी आता है। तो 12 तक क्या आएगा? ये आएगा, देखना। स्प्रिंग्स आर गिवन लीनियर स्प्रिंग, दैट मीन्स मैं बोला था लीनियर माने एवरेज वैल्यूज से काम चला सकते हैं। स्प्रिंग बहुत तरह का होगा, बाद में देखोगे। फिलहाल सोचो एवरेज जो है, तो क्या करेंगे? वर्क डन माने पी डीवी। अब कौन सा पी लूं? P1 ना P2? एवरेज ले लिया। कैसे? P1 प्लस P2/2। और डीवी कहां से मिलेगा? ये तो डीवी है, ये तो पिक्चर में दिखाया डीवी। डीवी और कोई नहीं, V2 माइनस V1, यही तो डीवी माने। फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ माइनस शुरू में वॉल्यूम कितना था, यही तो V2 V1 इक्वल्स टू वर्क डन बाय द स्प्रिंग। नहीं करेंगे हम लोग, यही बोलना चाहता हूं मैं। इसको बोलते हैं टेक्निक। नहीं करना इसको, कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेंथी होगा प्रोसेस, इसको नहीं करना है। तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर। अगर फिर से अगेन कंसेप्ट वाला पार्ट, एटमॉस्फेयर का प्रेशर बाहर, स्प्रिंग सिस्टम माने गैस जो है अंदर पिस्टन सिलेंडर का, उसका बाहर है एटमॉस्फेयर। ये रहा एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर, ये इंडिया का एटमॉस्फेयर, यूएसए का एटमॉस्फेयर, जो भी है। माने ऑन एन एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड दिस सिस्टम इज नॉट गोइंग टू चेंज। एटमॉस्फेयर तो पूरा जगह लेके है, उसका प्रेशर सेम ही रहेगा। तो एटमॉस्फेयर जो उसको ठेल रहा था इधर, उसका अगेंस्ट में तो ये गया ऐसे। व्हाट हैज बीन द वर्क डन अगेंस्ट दिस एटमॉस्फेयर? पी डीवी। कौन सा पी लूं? एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना था? P ATM। डीवी माना वही P ATM। अरे ATM तो नहीं लिखा मैं तो P1 लिख के छोड़ दिया। हाँ, तो ऑब्वियसली व्हेन दिस सिलेंडर पिस्टन इधर P गैस obviously was equal to P ATM, then only it will stay in equilibrium. Why? इधर कितना प्रेशर गैस का अंदर? P गैस। बाहर से एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर? P ATM। दोनों इक्वल होगा, तब तो ये जो पिस्टन है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। नाउ यू कैन से व्हाई देयर इज अ स्प्रिंग टू सपोर्ट। इसमें एक लैंग्वेज और देता है, क्यों? Because initially what happened, P ATM was equal to whatever pressure the gas was subjected to. Why? स्प्रिंग कोई काम नहीं करेगा, स्प्रिंग सपोर्ट नहीं देगा, नहीं देगा। कैसे? उसका गारंटी क्या है? नहीं, ये जो लीनियर स्प्रिंग है, ये लीनियर स्प्रिंग, मेरा जगह नहीं है, इधर लिख रहा हूं। ये लिखना कि इनिशियली, देखना मिलेगा, ये लिख के रखो, इनिशियली इन नेचुरल लेंथ। इसका माने क्या हुआ? नेचुरल लेंथ में माने क्या हुआ? माने दैट हैज नॉट बीन स्ट्रेस्ड और दैट हैज नॉट बीन इलोंगेटेड। इसका मतलब बाजार से खरीद के लाए, बॉट इट फ्रॉम अ शॉप और उसको फिट कर दिए, तो इट डजंट मेक एनी चेंज इन द इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स ये अभी भी लोड लिया नहीं स्प्रिंग, तो लोड ये दे रहा है गैस प्रेशर, और उधर से कौन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट मीन्स दे आर इक्वल इनिशियली। तो गैस का प्रेशर कितना होगा? गैस का प्रेशर, उसी को मैं P1 लिया हूं, गैस का प्रेशर P1 इनिशियल प्रेशर। तो ऑब्वियसली, क्वाइट एविडेंटली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो P1, देन ओनली दे वर इनिशियली एट बैलेंस स्टेज। अब तुम इसको कितना भी गर्म करते जाओ और ये पिस्टन कितना भी साइड में जाता जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड वो तो P1 से ही ठेलता रहेगा ना, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट गोइंग टू चेंज। दैट्स व्हाई वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय अप्लाइंग PdV विल बी गिवन बाय P1 into dV। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम है कितना? इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस P1। तो इससे और क्या मालूम हो गया? इससे और मालूम हो गया क्या? वर्क डन बाय द स्प्रिंग निकालना ही नहीं है। क्यों? वी विल सब्ट्रैक्ट दीज टू। वर्क डन बाय द स्प्रिंग निकालना नहीं है,
वी विल सब्ट्रैक्ट वर्क डन बाय द गैस, टोटल कितना हुआ माइनस वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको ठेलने के लिए कितना, दैट डिफरेंस विल बी वर्क डन बाय द स्प्रिंग, इजी हो जाएगा। और ये फॉर्मूला डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला ये तो डायरेक्ट, तो इसका सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा आंसर, ठीक है, दैट वाज इट। अब देखोगे, अच्छा इंटरनल एनर्जी चेंज, उसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है, आज सीख लिया ये फॉर्मूला शॉर्टकट, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो बी पार्ट, बी पार्ट, ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी अब है मजेदार चीज, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना है। देखो तो पार्ट बी को, हाँ बट देखो अब यू आर डूइंग आईआईटी सम, तो उसके लिए मैं बोला था ना एक एक सम एक एक नीट का क्वेश्चन है, कैसे बोला V2 2V1 हो गया, T2 3T1 हो गया, तो T से तो एक भी फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, टेम्परेचर से वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला वर्क डन का विद टेम्परेचर। हाँ इंटरनल एनर्जी में हो सकता है, लेकिन उसको भी मैं तो क्या बना दिया, प्रेशर वॉल्यूम बना दिया। तो क्या करना पड़ेगा, P1 V1, PV इक्वल्स टू nRT करना है, PV इक्वल्स टू nRT, तो P1 V1 इक्वल्स टू n मोल ऑफ गैस था, R T कितना था, T1 था, और P2 V2 n R वो तो T2 हो जाएगा, तो चेंज कर दे रहा हूं मैं, कैसे V2 का बदले में V2 का बदले में 2V1 और T2 का बदले में 3T1, ये अगर बैठा दोगे तो P2 2V1 NR तो छोड़ो, T2 कितना 3T1। नाउ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ये दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड 2 by 1 ये कर देंगे अगर, तो समझ रहे हो क्या होगा, P2 by P1 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, दैट मीन्स P2 इक्वल्स टू 3 by 2 P1, इधर 2 रहेगा, चलो P2 क्या मिल गया, 3 by 2 P1, ठीक है। नाउ इफ यू पुट द वैल्यूज, झटाक से आंसर आएगा, कैसे, क्या पूछा है, इंटरनल एनर्जी चेंज, ये फॉर्मूला, गैस कैसा था, गैस कुछ बोला नहीं, मोनो एटॉमिक बोल दिया, मोनो एटॉमिक, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना 3, बैठा रहा हूं मैं ये फॉर्मूला को, ये बैठा रहा हूं, इंटरनल एनर्जी चेंज 3 by 2 हो गया, P2 V2, P2 V2, P2 तो अभी निकाले भाई, 3 by 2, V2 दिया हुआ है क्या, V2 तो दिया हुआ है ना, 2V1, तो 3 by 2 P1 इंटू 2V1, P2 V2 हो गया, माइनस P1 V1, तो P1 V1 वैसे रख देंगे, P1 V1 हो गया, ये कितना आ रहा है, बस यही आंसर है, चेक करके देख लेंगे ठीक आ रहा है कि भूल आ रहा है। तो ये तो भाई 2 और 2 कैंसिल, सो 3P1 V1 माइनस P1 V1, 2P1 V1 ब्रैकेट का अंदर और बाहर 3 by 2, 2 कैंसिल, 3P1 V1, अरे आ गया, यही है, ये देखो यही है। बट शाम जितना प्रैक्टिस करोगे ना, इतना टाइम नहीं लगेगा, ये सब करने का जरूरत नहीं, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन, तो वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस, देखो ना अब ये क्या बन गया, ये तो V2 3V1, T2 कितना 4T1, पिछला बार भी ऐसा दिया हुआ था, आंसर कैसा आ गया था, इस बार भी ऐसे कर देंगे डायरेक्ट, P2 इक्वल्स टू, उधर कितना था 4, इधर कितना 3, 4 by 3 P1, खत्म, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। मोर यू प्रैक्टिस यू कैन ऑल्सो डू दिस फास्ट, ये हल्का हो गया, समझ रहे हो, P2 इक्वल्स टू 4 by 3 P1, ये कैसे मिल गया, समझ तो रहो कि उधर जो आएगा 4 आएगा और इधर जो रहेगा 3, डिवाइड करेंगे फिर से इक्वेशन 4 by 3 आएगा, चलो ये निकल गया। नाउ लेट अस फाइंड दिस ऑप्शन की वर्क डन बाय द गैस,
अब गैस का वर्क डन का क्या फॉर्मूला सीखे हम लोग, dw गैस का शॉर्टकट बताया था मैं, P1 प्लस P2 बाई 2 एवरेज प्रेशर P1, अच्छा सिर्फ नंबर ले लो, P1 माने 1 P1, P2 का सिर्फ नंबर लो, नंबर 4/3 P1 लिख दिया साइड में, P1 एक ही तो बात है, यही तो, P1 प्लस P2 बाई 2 हो गया, P1 प्लस P2 बाई 2, 1 P1 4/3 P1 बाई 2 हो गया, इंटू dv माना वॉल्यूम चेंज देखेंगे, वॉल्यूम का चेंज कहाँ दिया है, ए तो दिया है ये, V2 बन गया 3V1, तो पहले था V1 उससे बन गया 3V1, तो व्हाट हैज बीन द चेंज इन वॉल्यूम 2V1, 3V1 माइनस V1, आंसर आ गया, बस खत्म। कितना आंसर आ रहा है, 7/3 V1 P1 V1, 7/3 P1 V1 आ गया, यस, यही तो आंसर है, देखो 7/3 P1 V1, एक एक लाइन में आ रहा है आंसर ऐसे। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी, बाय।